नमस्कार। लेक्चर नंबर 15 में हम प्राइसिंग डिसीजन के साथ कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर में हम प्राइसिंग पॉलिसीज़ की बात करेंगे, जिनको हम स्ट्रैटेजीज़ भी कहते हैं। एक मार्केटर को ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी स्ट्रैटेजीज़ या पॉलिसीज़ उसको प्राइस करते वक्त फॉलो करनी है। सो उसकी कौन सी स्ट्रैटेजी वो फॉलो करेगा, वो उसके लिए उसको ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि what strategies are available to him which he can follow while pricing his products. There are major strategies and the types under them. The basis, that is the new product pricing strategies. जब एक न्यू प्रोडक्ट बनता है उसके लिए दो प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज अवेलेबल हैं मार्केटर के पास. इफ़ यू रिमेंबर in the chapter related to product in the PLC, product life cycle chapter, we talked about new product pricing policies. हमने न्यू प्रोडक्ट पॉलिसी प्राइसिंग पॉलिसीज़ की बात करी थी, जिसमें मैंने आपको कहा था कि मैं दो तरीके की प्राइसिंग पॉलिसीज़ होती हैं, मार्केट स्किमिंग एंड मार्केट पेनिट्रेशन. But I did not delve deep into that chapter. Now, today I'll be discussing what are these two pricing policies available to the marketer when he wants to bring in a new product into the market. And then these can be used in elaboration in that chapter as well. सो न्यू प्रोडक्ट जब हमें लाना है मार्केट के अंदर, दैट मीन्स इंट्रोडक्शन स्टेज के अंदर हमारे पास ये दो प्राइसिंग पॉलिसीज अवेलेबल हैं. So if a question is asked as to what policies, pricing policies or strategies you are required to are available for a new product, launching, so then you can talk about these two pricing policies only. So market skimming pricing क्या कहती है कि मार्केट जब आप एंटर करेंगे, या तो कंपटीशन बहुत होगा या कंपटीशन नहीं होगा. अगर आपने एक नॉवेल्टी प्रोडक्ट बनाया होगा तो कंपटीशन नहीं होगा. अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर एंटर करना चाह रहे हैं तो कंपटीशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होगा. सो इन्हीं दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये दो प्राइसिंग पॉलिसीज़ या strategies hai. So skimming means like you skim the milk, you take away the cream. See, in the similar manner, when there is the product is new, when there is less competition in the market, and when the marketer is aware that whatever he wants he can charge, then he can go in for market skimming pricing policy. In that case, he will charge higher rates. He will price the product at a higher rate, and he will skim away the profits before the competitors enter into the market. So competitors की एंट्री के पहले ही वो प्राइस को इतना हाई रखेगा कि वो प्राइस जो है इतना हाई रखेगा कि वो जितना भी प्रॉफिट कमा सकता है वो पहले कमा ले, जब तक कि कॉम्पिटिटर्स उस मार्केट के अंदर आते हैं. सो इसको बोलते हैं मार्केट स्किमिंग प्राइसिंग पॉलिसी. डेल हैज़ यूज्ड this policy quite often. Maggi noodles, when it tried to enter Indian market, it used the market skimming pricing policy because there was no other competitor of Maggi noodles when it entered the market way back in 80s. So जब आपका प्रोडक्ट नया है और आपका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है, नॉवल प्रोडक्ट है, तो आप मार्केट स्किमिंग प्राइसिंग पॉलिसी यूज़ कर सकते हैं. इसमें हम लोग मैक्सिमम रेट रखते हैं ताकि हम प्रॉफिट्स को पहले ही रीप कर लें, बिकॉज बाय द टाइम कॉम्पिटिटर्स विल एंटर यू विल हैव टू स्लैश डाउन द प्राइसेस. Similarly, in the case of market penetration, this pricing strategy says that we need to go slow, enter slowly into the market in case the market has lot of competitors already existing in the market, right? अगर आपके मार्केट के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आपको स्लोली उस मार्केट के अंदर जाना है. सो दैट इज वाई इट इज नोन एज मार्केट पेनिट्रेशन. यू नीड टू पेनिट्रेट इन टू द मार्केट वेरी स्लोली. सो फॉर दैट मैटर यू हैव टू प्राइस योर प्रोडक्ट at a lower rate in order to gain entry into the market, because since the consumer is generally price sensitive, any product which will he find at a lesser cost as compared to the competitors, he would try and buy the product. So यही एक फैक्ट ध्यान में रखते हुए कि आप लोअर कॉस्ट लगाते हैं प्रोडक्ट की और धीरे धीरे एंट्री गेन करते हैं टिल द टाइम यू रीच द स्टेज ऑफ ग्रोथ. सो मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग उन मार्केट्स के अंदर ज़रूरी है जहां ऑलरेडी बहुत सारा कंपटीशन एग्जिस्ट कर रहा है और आपको उस मार्केट के अंदर अपनी जगह बनानी है, राइट? सो मार्केट पेनिट्रेशन पॉलिसी बहुत सारे प्रोडक्ट्स जहाँ पे जो ऑलरेडी फॉर एग्जांपल आपका जो यू हैड एप्पल आईफोन एंड ऑल द अदर होम ग्रोन ब्रांड्स ऑफ phones, they adopted market penetration pricing policy to enter into the mobile phone
markets. Reliance has been using a lot of market penetration pricing policies in while launching their products into the market. Now, product line pricing strategies. Some pricing strategies are based on the product line. If you remember, what is a product line? A product line is a in the product mix. It's a line in which various type of various variants of the products are produced. So product line को लेके अगर आप pricing strategy करना चाहते हैं ताकि आपके प्रोडक्ट लाइन मीन्स यू हैव सिमिलर प्रोडक्ट्स इन दैट लाइन, सो यू वांट दैट इन दैट प्रोडक्ट लाइन एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट भी बिक जाए, तो उसके लिए आपके पास ये स्ट्रैटेजीज अवेलेबल हैं. कैप्टिव प्राइसिंग. कैप्टिव प्राइसिंग में है कि यू वांट टू कैप्चर द कस्टमर. आप कोशिश करते हैं प्राइसिंग को लो रखने की, किसी दो तीन प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग लो रखते हैं ताकि कस्टमर आपके रिटेल हाउस में या आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाए और उसके अट्रैक्शन के साथ वो बाकी के प्रोडक्ट्स भी खरीदे, बिकॉज वंस ही एंटर्स द शोरूम ही विल फाइंड अदर प्रोडक्ट्स ऑल्सो, एंड इन दैट प्रोसेस ही विल बी लैंडिंग अप बाइंग the other products also besides the products which have been priced low. So bet and switch pricing means that here in this case, what you try to do is you again try to put a very popular product at a very low price, and then when the customer once comes to buy the product, then he might get attracted to the premium brands also, which are very high priced. You put a price, very base model price, at a very reasonable price, and then in that when the customer once comes to buy that product, he will switch on to the other products as well, and in this way he might land up buying a premium product. Premium pricing is a pricing wherein in the product line uh, you try to price the product which is very very premium, or it is very very quality wise very good, at a higher price, so that the customer comes to know that this product is priced at a higher price because it is a premium product. So in order to give it a differentiation from the other products, and to make कस्टमर को ये एहसास दिलाना कि ये प्रोडक्ट नॉर्मल प्रोडक्ट्स के जैसे नहीं है, ये एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, इसलिए इसके लिए हम एक प्रीमियम प्राइस चार्ज कर रहे हैं. सो हाई एंड मॉडल्स, लग्जरी गुड्स, ये सारे जो हैं आपकी प्रीमियम प्राइसिंग फॉलो करते हैं. Then two part pricing, and in that line you need to tell that this is the highest model, that is why we are charging more in this case. इसके फीचर्स ज़्यादा हैं. बेस मॉडल से लेके हाई एंड मॉडल में जो फ़र्क होता है वो प्रीमियम प्राइसिंग की वजह से होता है. सो हाई एंड मॉडल में आप बताएंगे कि इतने इसके एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, इतने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उसमें काफ़ी हद तक ये चीज़ यूज़ की जाती है, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ द वेरियस features, various different, maybe design, style, color, you land up charging more for that product. So the next in product line pricing strategies are two part pricing. ये जनरली सर्विसेज में यूज़ किया जाता है कि आपकी प्राइसिंग दो पार्ट में रहती है. आप अपनी प्राइसिंग को दो में डिवाइड कर लेते हैं, और जो बेस सर्विस आप दे रहे हैं उसको आप सस्ते में दे देते हैं, और बाकी जो उसके साथ लिंक्ड हैं उनको आप महंगे दाम पे देते हैं. सो फॉर एग्जांपल, लाइक if you have for example, if you have it is very much related to the club memberships. क्लब का मेन मेंबरशिप आपको शायद सस्ता मिल जाएगा, लेकिन उसकी सब्सक्रिप्शन एवरी ईयर जो आपको देनी पड़ती है वो काफ़ी हाई रेट पे रहती है. सिमिलरली यू माइट गेट अ पीसी at a computer at a very reasonable rate, but the software with which it has to work is very might be given at a very high rate, and a computer cannot work without a software. So in two part pricing, you attract the customer by pricing the base product at a very low price, और उसके साथ associated जो उसकी accessories हैं, जो उसकी वजह से जो काम कर पाएगा, उसको आप उसकी pricing को high कर देते हैं. Then coming to the psychological pricing strategies. These strategies are related to the psychology of the buyer, कि बायर को साइकोलॉजिकली फील होता है और उस वजह से वो प्राइसिंग की जाती है. इसमें नंबर वन टाइप है ऑड प्राइसिंग. ऑड प्राइसिंग का मतलब ये है कि आप एक ऑड प्राइस रखते हैं और उसमें फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट इज प्राइस एट 299, सो इट विल गिव यू अ फीलिंग दैट इज द प्रोडक्ट इज इन द रेंज ऑफ 200 rupees, बट एक्चुअली इट इज इन द रेंज ऑफ 300 rupees. सो बाटा हैज़ बीन यूजिंग दिस प्राइसिंग, ऑड प्राइसिंग, for a long time, but now many products I have seen when I go and shop outside, शॉपिंग करते हुए मैंने बहुत नोटिस किया है कि काफ़ी सारी अभी फुटवेयर ब्रांड
brands and also the other brands like the t-shirts and all, they are being priced at odd pricing, wherein you are priced at a figure like 375, 380, 392, which gives us a feeling that the product is at 300 range, but actually you're paying 400. So even if you're aware of the fact, then also there's a tendency कि वो कस्टमर जो है उसको कम रेट का समझ के खरीद लेता है. So this is psychologically playing, this is playing with the psychology of the customers, that you are giving a product at a less price, whereas it is priced at a higher range. सो द नेक्स्ट इज द बंडल प्राइसिंग. बंडल प्राइसिंग के अंदर क्या है कि जब एक प्रोडक्ट एक बंडल में बिकता है, फॉर एग्जांपल आपकी जब आप एक कार खरीदते हैं तो कार के साथ इंश्योरेंस, रोड टैक्स, एक्सेसरीज, many other things come with the buying of a car. Similarly, when you buy a computer, you need to have a software, you need to have a mouse, you have to have a keyboard, you need to have many other accessories, maybe the voice recorders and all these things also you need to have with you. So जब एक प्रोडक्ट एक बंडल में बिकता है तो उसको हम बंडल प्राइसिंग बोलते हैं. सो इंस्टेड ऑफ बाइंग product individually, the computer seller might say, I will give you everything related to the computer along with the computer with this much of price. So he bundles all the accessories related to that particular product, without which that main product cannot work. So या उसको enhance करने के लिए आपको बाकी की चीज़ें चाहिए. So उसको मार्केटर क्या करता है, एक बंडल में बांध देता है और उसकी एक प्राइसिंग कोट कर देता है. So this is also very very prevalent in the case of tour agencies, travel agencies. They will give you hotel bookings, they'll give you transport, they'll give you sightseeing, everything they quote in a bundle. So bundle pricing is also very very popular amongst psychological pricing strategies. Now the reference pricing. Reference pricing is when you try to price your product in relation to your some referred product. जो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा जिसकी ब्रांड इमेज है या जो प्रोडक्ट बहुत बिकता है, राइट, सो उसको आप रेफरेंस प्राइसिंग के अंडर ले सकते हैं. जैसे अगर आप आईफोन का बहुत नाम है मोबाइल इंडस्ट्री में, सो ऑल द अदर ब्रांड्स, होम ग्रोन और फॉरेन ग्रोन, दे price them in comparison to the Apple iPhone because it is very expensive. So in relation to that, they give all the features but at a very less price. So in reference to that product, we are offering all these features at a lesser price. So that is known as reference pricing. For example, Tata came out with Nano, and there the reference point was that that I will give you a car at a very less price, which will be a car for lower middle class or middle class people. So it gave the reference of a normal car, and in relation to normal car, he tried to produce a car which was at a priced at a lesser rate. देन कमिंग ऑन टू द प्रेस्टीज प्राइसिंग. प्रेस्टीज प्राइसिंग में क्या होता है कि आप एक प्रेस्टीज अटैच कर देते हैं अपने प्रोडक्ट्स के साथ. ब्रांडेड गुड्स के साथ ये बहुत चलता है, क्योंकि जो अब आप ब्रांड बिल्ड करते हैं, यू ट्राई टू बिल्ड अप अ प्रेस्टीज विद द ब्रांड एंड यू ट्राई टू गिव इट लाइक prestige with a brand, and then with that prestige you try to price your product accordingly. So when a prestige is attached to a product, the customer is ready to pay any kind of price because he wants to associate with that product which has got prestige. So जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, जो बड़े ब्रांडेड बैग्स हैं, उनके साथ एक अगर प्रेस्टीज एलिमेंट अटैच हो जाता है तो आप उसको कैसे भी प्राइस कर सकते हैं. So they might have the similar kind of material used like the normal bag, but the prestige attached to it will lead to costing it more, राइट. सो इस तरह जब भी आप अपने प्रोडक्ट को एक प्रेस्टीज अटैच कर देते हैं तो उसकी प्राइसिंग आप उस हिसाब से कर सकते हैं. सो वेरी वेरी रेलिवेंट फॉर ब्रांडेड गुड्स और लग्जरी गुड्स. देन प्रमोशनल प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज. प्रमोशनल प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज में जहां आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हैं, इसमें लॉस लीडर प्राइसिंग है. लॉस लीडर प्राइसिंग के अंदर क्या है कि आप एक जो प्रोडक्ट आपका बहुत बिकता है या आपको लगता है काफ़ी बिकेगा, तो उसको आप लॉस पे रख देते हैं, इवन एट कॉस्ट
at no profit no loss or at lesser than the cost. So उस को लॉस लीडर प्राइसिंग में ले लेते हैं, लॉस लीडर बना देते हैं, और उसके चलते जब एक मार्केटर उसको खरीद जब एक कंज्यूमर उसको खरीदने आता है, उस लॉस लीडर के चलते वो और प्रोडक्ट्स या बेटर प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी जितनी भी वर्चुअल ऑनलाइन सेल्स चलती हैं प्लेटफॉर्म्स, अमेजोन एटसेट्रा, दे गिव यू समटाइम्स इलेक्ट्रॉनिक्स एट अ वेरी वेरी रीजनेबल price, which you might not even get by the manufacturer's own distribution outlet. So there what are they trying to do is they are trying to sell the leader product at a loss, and in that process the consumer ends up buying many more products of theirs. So this is known as loss leader pricing, but of late it has been like not the manufacturers have not been very happy with the fact that if you less sell the product their product at a very low price, then their image is tarnished. उनका गुडविल खराब हो जाता है कि अगर आप उनके प्रोडक्ट को लेस देन कॉस्ट पे बेचें, जो कि वो खुद भी नहीं कर सकते। सो कोई अगर प्लेटफॉर्म या कोई अगर इंटरमीडियरी ऐसा करता है, सो इट इज़ नॉट गुड फॉर द मैन्युफैक्चरर। बट येस, द रिटेलर्स जनरली फॉलो दिस प्राइसिंग बिकॉज दे वांट टू क्लियर देयर उनको अपने सारा जो भी उनके पास सामान पड़ा है उसको क्लियर करने के लिए या उनकी इन्वेंट्री क्लियर करने के लिए ये प्राइसिंग वो यूज़ करते हैं। Then special event pricing. Special event pricing is that you price the products for special events. So you see, when there is Diwali, the pricing of the products change. So on event basis also the pricing is done, and there can be many there can be Christmas, there can be Eid, wherein you what you do is you price the products specific in relation to the specific event that is happening, right? Sometimes what the big chains do, for example, हैप्पी वेंसडे, जो बड़ी चेन्स है रिटेल हाउसेस की, वो एक हैप्पी वेंसडे डिक्लेयर कर देती हैं जिस दिन वो स्पेशल डिस्काउंट्स देते हैं वेंसडे के दिन। इसी तरह टी जी आई एफ यूज टू गिव डिस्काउंट्स ऑन फ्राइडेज। सो कोई एक स्पेशल इवेंट बना के या कोई एक स्पेशल डे बना के आप उस दिन स्पेशल प्राइसिंग करते हैं, तो तब इसको स्पेशल इवेंट प्राइसिंग कहा जाता है। ये सब शॉर्ट टर्म टूल्स होते हैं टू लेट द सेल्स टेक अ लीप, थोड़ी देर के लिए सेल्स को बढ़ाने के लिए या पुश करने के लिए। क्योंकि अगर दिवाली आ रही है या अगर कोई क्रिसमस आ रहा है, सो उस दौरान जितना भी सामान लोग, बिकॉज इफ द होल ईयर दे आर वेटिंग फॉर दीज स्पेशल इवेंट्स, और इफ देयर इज अ cricket match, people are waiting for that, if there's a concert, so whatever things are related, whatever products are related to those events will be sold only during that event. So that is why, to push the sales, special pricing is done during these events. And I told you, pricing is very very flexible and very very you have to be very flexible with your pricing strategies. So you, as a marketer, you have to keep changing your pricing strategies as and when required. Now coming to the differentiated pricing strategies. Differentiated pricing strategies के अंदर geographic pricing है. On the basis of geography also you can price differently. For example, in the case of North India, you might be charging different price. In South India, you might be charging different price. In a state, you might be charging different prices in different localities. So depending on purchasing power of the people, sometimes geographic pricing is also done, and also the transportation cost involved also makes it a different kind of pricing related to geography. जहाँ ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है, जहाँ पे टेस्ट एंड हैबिट्स डिफरेंट हो जाते हैं, तो हम जोग्राफिकली प्राइस करते हैं, जोग्राफी के बेसिस पे अलग अलग प्राइसिंग फिक्स करते हैं। नेगोशिएटेड प्राइसिंग इज व्हेन यू can negotiate for the pricing. There's a price fixed, there's a price quoted by the seller, and the buyer can negotiate on that price. For example, in the case of reality sector, ये इसमें बहुत चलता है कि जो प्राइस कोट किया जाता है उस पे नेगोशिएशन होता है, and then the payment is done accordingly. In the cases of you buy your hardware, you buy your anything where the negotiation is possible, it is known as negotiated pricing. So it depends on the marketer whether he will give this kind of privilege to the customer or not. नेगोशिएशन की प्रिविलेज वो एक कस्टमर को देगा या नहीं देगा, ये डिपेंड करता है मार्केटर के ऊपर कि क्या वो नेगोशिएट करने की प्रिविलेज देगा या नहीं. But if you give that privilege of negotiating to the customers, the customer is psychologically very happy,
राइट. सो देन यू हैव प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजीज, जिसमें आप प्राइस को एडजस्ट करने की, एडजस्टमेंट से अपनी सेल को बढ़ाने की कोशिश करते हैं. इसमें आप डिस्काउंट्स और अलाउंसेस को ले लेते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स आर देयर, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट. ये सब डिस्काउंट्स आप कब और कहाँ लगाएंगे, इवेंट्स के टाइम पे लगाएंगे या पूरा थ्रू आउट द ईयर लगाएंगे, कितना अलाउंसेस देंगे और रिटेलर्स को, इंटरमीडियरीज को, ये सब आप आपकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज के अंदर ये डिसीजंस लिए जाते हैं. एंड देन यू हैव डायनामिक प्राइसिंग. डायनामिक प्राइसिंग इज दैट यू प्राइस अकॉर्डिंग टू द डायनामिक्स ऑफ द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट में जैसे जैसे चेंजेस आते हैं, आप उस हिसाब से अपनी प्राइसिंग को चेंज करते रहते हैं वेरी ऑफन. सो जितने भी वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी वर्चुअल बिजनेसेस चल रहे हैं, आई पर्सनली फाइंड दे यूज अ लॉट ऑफ डायनामिक प्राइसिंग, बिकॉज every now and then, every in fact on day to day basis also, you find the prices of FMCG goods going up and down. सो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जा रही है वर्चुअल मार्केटिंग के अंदर, और अदरवाइज ऑल्सो फिजिकल मार्केटिंग के अंदर भी इसका काफ़ी रोल है, बिकॉज जैसे ही एनवायरनमेंट में डायनामिक्स चेंज होते हैं, प्राइसिंग आपको चेंज करनी पड़ती है. ओके. सो नाउ कमिंग ऑन टू द factors affecting, the last part of pricing with which we'll be ending up the pricing chapter is factors affecting pricing. जब हम प्राइसिंग करने जाते हैं या प्राइस फिक्सअप करते हैं किसी प्रोडक्ट का, तो उसमें बहुत सारे और फैक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं. मार्केटर के करने से क्या होता है, मार्केटर तो कहता है कि मैक्सिमम प्राइस लगाओ, मैक्सिमम प्रॉफिट रीप करो, हम तो यही चाहेंगे एज अ बिजनेस पर्सन. लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत सारे और फैक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं प्राइसिंग के डिसीजन में. एंड आई ऑल्सो टेल यू वन थिंग, दैट जो 4 P's का मिक्स होता है ना, उसमें हर पी जो है वो दूसरे पे असर डालता है. हर पी का इम्पैक्ट दूसरे पी पे के ऊपर होगा, राइट. सो इसी तरह अब हम देखते हैं कि प्राइसिंग पे कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. अब आपकी कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या हैं. आपकी ये दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल. सो अगर हम एक्सटर्नल की बात करें, तो उसमें नंबर वन है कि आपके कंपनीज के ऑब्जेक्टिव क्या हैं. कंपनी क्या चाहती है, कंपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाहती है, कंपनी मार्केट शेयर को अचीव करना चाहती है. रिमेंबर द ऑब्जेक्टिव आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर. सो ये उससे रिलेटेड है कि जो ऑब्जेक्टिव होगा उसी हिसाब से हमें प्राइसिंग करनी होगी. अब आपकी प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है. प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने ये जानना है कि आप कंपटीशन बीट करने के लिए प्राइस प्राइस कर रहे हैं, या आप सेल बढ़ाने के लिए प्राइस कर रहे हैं, या आप एक इवेंट को कैश करने के लिए प्राइस कर रहे हैं. सो दैट विल कम अंडर प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव. सो अगर ये सब भी आपकी प्राइसिंग को असर डालेगा. देन कमिंग ऑन टू द मार्केटिंग मिक्स. आपकी मार्केटिंग मिक्स में आपने प्रोडक्ट कैसा बनाना सोचा है, आप उसकी प्रमोशन कितना करना चाहते हैं. सो ये सारी चीज़ों में फाइनेंस इन्वॉल्व होता है, प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होता है, प्रमोशन में भी इन्वॉल्व होता है. सो उसको ध्यान में रखते हुए आपको प्राइसिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर उससे लेस प्राइस करेंगे तो यू विल बी सेलिंग योर प्रोडक्ट एट लॉस. सो दैट इज ऑल द अदर एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स विल ऑल्सो पुट एन इम्पैक्ट ऑन योर प्राइसिंग. देन कॉस्ट कंसिडरेशन. हमारे को प्रोडक्ट बनाने में कॉस्ट कितनी पड़ी, ये तो बड़ा ही बेसिक सवाल, बड़ा ही बेसिक चीज़ है. उतनी कॉस्ट हमें कवर करनी ही है. सो उसके ऊपर ही हमें प्राइसिंग करनी होगी. पीएलसी स्टेज कौन सी है, अभी मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन स्टेज पे हमारे पास दो स्ट्रैटेजीज अवेलेबल हैं. सो आपकी स्टेज क्या, आपके प्रोडक्ट की स्टेज क्या है, ये भी प्राइसिंग को बहुत इम्पैक्ट करती है. अगर आपका स्टेज जो है वो सेचुरेशन है, तो आप प्राइस कट्स पे प्ले करेंगे. आप प्राइस कट्स करके अपने प्रोडक्ट को किसी तरह से उस स्टेज में रखने की कोशिश करेंगे. सो प्रोडक्ट लाइफ स्टाइल साइकिल स्टेज इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. आपका प्रोडक्ट बाकियों से कितना अलग है, प्रीमियम, कितना डिफरेंट, कितना यूनिक, कितना क्या यूएसपी है. अगर वो बहुत अच्छा है, ऐसा है, यू कैन चार्ज वट एवर यू वॉन्ट. देन पीपल विल बाई इट बिकॉज ऑफ इट्स डिफरेंशिएशन, बिकॉज ऑफ इट्स यूनिकनेस. सो ये भी एक फैक्टर है जो आपकी प्राइसिंग में पे का में रोल प्ले करता है. सो दीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स. देन इंटरनल फैक्टर्स आर मार्केट डिमांड. I'm sorry. I'm extremely sorry. This has been actually, these should be the internal factors and these should be the external factor. I will correct it before I post. So these are the external factors which I have discussed right now. I was wondering why product differentiation could be a external factor, but no, these are the internal factors which are related to the company itself. And now coming on to the external ones. एक्सटर्नल वन इज़ दैट मार्केट डिमांड, कि बाहर डिमांड कैसी है. अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है, तो आप जितना मर्जी प्राइस करिए, बिकेगा नहीं. सो आपकी डिमांड कितनी है, आपका प्रोडक्ट को लोग कितना पसंद करते हैं, उस पर भी प्राइसिंग उस पर भी डिपेंड करेगी. आपके सप्लायर्स के रिलेशंस कैसे हैं, आपके सप्लायर्स आपको राइट टाइम पे रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे. बिकॉज अगर आपके पास ऐसा ऑन टाइम सप्लाई रॉ मटेरियल नहीं आता, तो आप डिमांड मीट नहीं कर पाते, एंड देन इट
इज़ नॉट गुड फॉर द कंपनी. देन इकोनॉमिक कंडीशंस का इम्पैक्ट भी बहुत होता है प्राइसिंग पे. इफ़ यू द कंपनी, इफ़ अ कंट्री इज इन रिसेशन, then how can people will not have the purchasing power and they will not be able to buy the product. तो उस समय आपको प्राइसिंग अपनी कम करनी पड़ेगी, या आपकी यू नो यस दैट्स इट. देन गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं. कहीं कई बार गवर्नमेंट जो है वो किसी चीज़ को सब्सिडाइज कर देती है, किसी पे कोई कंट्रोल्स लगाए जाते हैं कि इससे ज़्यादा नहीं बेचना है. सो दीज गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और दीज गवर्नमेंट सैंक्शंस कैन ऑल्सो इम्पैक्ट आर प्राइसिंग. सो कॉम्पिटिशन ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज प्राइसिंग को बेसिकली हम कॉम्पिटिटर के हिसाब से ही करते हैं, क्योंकि अगर हम उसको ध्यान में नहीं देंगे तो कंपटीशन को बीट नहीं कर पाएंगे. सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच हैज़ टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल वी आर फ्रेमिंग आर प्राइसिंग फॉर द प्रोडक्ट. देन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जितने हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कितने इन्वॉल्व करेंगे, जितने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मतलब रिटेलर्स इन्वॉल्व करेंगे, इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व करेंगे, उतना ही हमारा प्रोडक्ट महंगा होता जाएगा. सो ये भी डिपेंड करता है, हमारा प्राइस इनके इंक्लूजन पे भी डिपेंड करता है कि हमारा प्रोडक्ट का प्राइस कैसा रहेगा. So I think this is all in with in marketing, and I'm so sorry with this grave mistake I've made. So यहाँ पे internal है, यहाँ पे external है. And thank you so much for listening to me. Have a happy day, be happy, spread smiles, and have a wonderful time ahead. Thank you so much.